हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आफ्टरनून इसलिए क्योंकि ये वीडियो मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ इट्स आफ्टरनून ओवर हियर। सो लेट्स ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड रैंकिंग फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी, और बहुत सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए भी दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो मैंने आपको OLAP फंक्शन का एक बाइफर्केशन दिया था पिछले वीडियो में, व्हेन वी वर जस्ट ट्राइंग टू बाइफर्केट द OLAP फंक्शन, राइट। सो OLAP function, online analytical functions, where you get all the records in the output, all the columns in the output along with the aggregation very easily. That is your OLAP function, right? इसके दो बाइफर्केशन होते हैं, एक होता है विंडो एग्रीगेट फंक्शन और दूसरा होता है रैंकिंग फंक्शन। विंडो एग्रीगेट फंक्शन के बारे में हमने बात किया है, काफ़ी सारी क्वेरीज भी हमने रिजॉल्व करी हैं, एंड वी हैव ऑल्सो सीन हाउ यू कैन डू डेटा एनालिसिस इन अ बेटर वे with the help of OLAP functions, right? With the help of window aggregate functions. Now let us talk about ranking function. Ranking function में तीन तरह के फंक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला वाला है रैंक, दूसरा है डेंस रैंक और तीसरा है रो नंबर। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि whenever you are using a OLAP function, ओवर विंडो आपको साथ में यूज़ करना ही है। ओवर विंडो ही OLAP फंक्शन की पहचान है, दैट यस यू आर यूजिंग ओवर विंडो, दैट्स द रीज़न दिस इज कॉल्ड OLAP function. Now let us try to discuss about first, that is your rank, right? कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, वो समझ लो, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग प्रैक्टिकली क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है? द कॉलम ऑन विच यू वांट टू जनरेट द रैंकिंग, वी हैव टू पास दैट कॉलम इनसाइड द ओवर विंडो। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि रैंकिंग फंक्शन यूज़ करना क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न दैट यू आर यूजिंग रैंकिंग फंक्शन। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, बहुत ही प्रैक्टिकल से एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको बहुत ही ईजिली समझ में आएगा। आप एक स्कूल में पढ़ते हैं या आप एक कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ पे आपकी एक पूरी क्लास है। क्लास में मान के चलिए 40 स्टूडेंट्स हैं। उन 40 स्टूडेंट्स को मुझे रैंक करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स, और अगर हर स्टूडेंट को मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, मान के चलो किसी को है 98 विच इज़ द हाइएस्ट मार्क, सो आई विल रैंक हिम फर्स्ट, ही इज़ द फर्स्ट रैंक। अगर किसी स्टूडेंट को 95 मार्क्स हैं तो ही विल बी सेकेंड, किसी को अगर 91 मार्क्स हैं तो ही विल बी थर्ड, एंड रिस्पेक्टिवली वी हैव टू गिव द मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। तो कौन से कॉलम के ऊपर आप रैंक जनरेट करना चाह रहे हो? आई वॉन्ट टू जनरेट रैंक ऑन द कॉलम ऑफ मार्क्स। मार्क्स कॉलम के ऊपर मैंने रैंक जनरेट करना है, राइट? बट उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि मार्क्स तो सबके ऐसे तो नहीं होंगे कि सबसे पहले 98 हैं फिर 92 हैं। रैंडम मार्क्स आते हैं, किसी के 72 हैं फिर 45 हैं फिर 78 हैं, राइट? ऐसे मार्क्स आते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर टू अंडरस्टैंड इज दैट व्हेनेवर यू आर यूजिंग रैंकिंग फंक्शन यू हैव टू यूज ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज यू हैव टू यूज इन द ओवर विंडो। अगर ऑर्डर बाय क्लॉज आपने यूज़ नहीं किया है तो रैंकिंग फंक्शन काम नहीं करेगा। दिस इज़ द फर्स्ट रूल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऑर्डर बाय क्लॉज इज मैंडेटरी, राइट? द कॉलम विल बी सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट, राइट? और अगर आपको उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आपको DESC कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। DESC कीवर्ड, राइट? फर्स्ट इट विल सॉर्ट द कॉलम and accordingly it will generate the ranking number. First it will sort the column and accordingly it will generate the ranking number, right? The main point in the rank function is, बाकी सारे पॉइंट तो सारे ही फंक्शंस में कॉमन रहेंगे, चाहे वो रैंक हो, चाहे डेंस रैंक हो, चाहे रो नंबर हो। जो पॉइंट मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज़ द मेजर थिंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। द मेन पॉइंट इन द रैंक फंक्शन इज इट विल जनरेट द रैंकिंग नंबर, बट इफ इट गेट्स द सेम वैल्यू, if it gets the same value, it will generate the same ranking number and it will skip the next ranking number. It will skip the next ranking number, right? Let us do a practical, आपको और ज़्यादा समझेगा। So I have a table called sales live table. Don't worry, टेबल का create statement और टेबल का insert statement मैंने description box में डाल दिया है। You create the table, insert the data and directly perform the queries, write the queries. You will be able to understand the concept directly. You do not have to waste your time while creating the table, inserting the data. वो मेहनत मैंने आपके लिए किया हुआ है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है और कोड को रन करना है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे एंड यू विल बी गेटिंग मनी, राइट? चलिए, this is what the query that we are going to run.
So first of all, let me give you an overview about the table, that what data that we have inside the table. So we can see that I'm running a select query. So let's just do select star from sales live table, and this is the data that we have. Try to understand the data. You will be getting the crux of the query. First column that we have is product ID. Second column that we have is sales date, and the third column that we have is amount. Right? First column is product ID, then sale date, and then we have amount. Now I'm going to apply a ranking function on this amount column, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अलग अलग नंबर्स हैं कि कौन से प्रोडक्ट का क्या अमाउंट है यानी क्या प्राइस है. So for that I have written a query. Let me rewrite the query for you so that you can get the idea. I want to retrieve all the columns, so I need to say select product ID. Let me just directly copy paste this, and then I want sale date, and then I want amount. I also want amount in the output, right? Comma, I want to generate rank, right? I want to generate rank. So I can say rank, and I need to say bracket. It's a non-case sensitive language. चाहे उसको आप capital में लिखो या small case में लिखो, that's not a problem. And I'll be using over window. Now inside the over window, use a bracket, and you can say order by amount. First I want to sort my data on the basis of order by amount. मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आप रैंक फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करना मैंडेटरी है. दैट ऑर्डर बाय क्लॉज यू हैव टू यूज़ इनसाइड द ओवर विंडो. नाउ दिस इज़ माई रैंकिंग कॉलम, दिस इज़ माई OLAP कॉलम, राइट? दीज आर माई एग्जिस्टिंग कॉलम. Every column is separated with a comma, and this is my OLAP column or ranking column, you can say. I should always give a name to this column, so I can say low to high, right? या फिर I can say ranking, that's not a problem. ये मेरा हो गया alias, right? From which table? So I will say from sales live table, right? From sales live table. Let me select the code and let me try to run the code. So you can see that we have ranking generated. Now how the ranking is being generated, just simply see that 1 2 3 4 5 6 6 6 and then 9, then 10 10 and then 12, right? So why 6 6 6 and then directly 9? Because you can see that on the 6th position you have 15,000 15,000 15,000, and that's the reason the ranking function has generated the same ranking number, but the next ranking number it has skipped. अगला रैंकिंग नंबर उसने दिया ही नहीं है, 7 भी नहीं दिया है और 8 भी नहीं दिया है. डायरेक्टली उस रैंकिंग फंक्शन ने रैंक दिया है 9. 9 के बाद वी हैव सिमिलर वैल्यू 20,000 and 20,000. That's the reason it has given same ranking number as 10 and 10, and then after that 11 it has skipped, and then directly it has given 12th, right? So what is the behavior of ranking function, or what is the behavior of rank function? The behavior of a rank function is that whenever it gets the same value, it will give you the same ranking number, but if it has, it will give you the same ranking number, but the next ranking number it will skip. That is the major idea behind the ranking function. But this order by in the ascending order does not make much sense, because I want to generate ranking on the basis of descending order. बड़ा अमाउंट जो है वो सबसे पहले होना चाहिए, and that has to be ranked as first. So for that matter I'll be using a keyword called DESC over here inside the over window, order by amount DESC, and let me run the query. And you can see that 27,000 is on top, right? And 3,000 is at the bottom, and then 27,000 is ranked as first, and then finally 1 2 2 3 is skipped, 4 5 5 5 6 and 7 is skipped, and then 8 9 10 11 and 12. All right, so I hope you got the point. This is what the behavior of a rank function. Now in the next video let's try to understand what is the behavior of dense rank function, right? And of course it's an interview question. So see you in the next video.